हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा कि देयर वाज अ प्रीटी मच बिग गैप डाउन ऑन 5th ऑफ अगस्त और इस दिन के बाद वी हैव बीन सीइंग कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड मूवमेंट हैपनिंग इन द मार्केट्स। ओके, यहाँ इसके बाद हमने जो देखा प्रीटी मच रेंज बाउंड, बहुत ज्यादा चॉपीनेस था। अगर आप देखें, इस लो को भी मार्केट ने नहीं तोड़ा और इस हाई को भी नहीं तोड़ा। Only on Friday, which is on 16th of August, we saw that the prices closed above the high of 5th August, which is a positive sign. सबसे पहले अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम चार्ट देखूं तो प्राइजेस जो हैं वो they are trading above the dual moving averages, so no problem. Even in the weekly time frame chart, you can see prices are trending on the upside, no issues. ओनली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक वीकली गैप है। जनरली दोस्तों, जो गैप्स होते हैं वो डेली चार्ट पे ज्यादा दिखते हैं इन कंपैरिजन टू डेली चार्ट्स एंड अदर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स, बट यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे हमको गैप दिख रहा है। इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट वी ऑल्सो हैव अ गैप। वी कैन सी दैट द प्राइजेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप। इवन आरएसआई ने भी थोड़ा ऊपर का डायरेक्शन पकड़ा हुआ है। अगर मैं 2 आवरली चार्ट यहाँ पे ओपन करूँ तो 2 आवरली चार्ट में भी हमको दिखेगा कि after a decent building of base, because यहाँ पे what has happened is one thing which is important. We have a negative divergence, positive divergence in the RSI. देखिए, प्राइस ने लोअर लो बनाया था और RSI ने हायर लो बनाया था। दिस वाज अ डिसेंट बेस एंड आफ्टर दैट कंसोलिडेशन हैपेंड एंड देन देयर इज अ डिसेंट ब्रेकआउट। बट ये ब्रेकआउट में हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है एक गैप के पास हुआ है, तो गैप के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज 24,665। इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाता है देन इट विल बी एडिंग टू द पॉजिटिविटी विच वाज क्रिएटेड ऑन फ्राइडेज मूवमेंट। बिकॉज इन दिस चॉपीनेस व्हाट हैपेंस इज, अगर मार्केट एक दिन ऊपर जाएगा दूसरे दिन नीचे आएगा, देन you will not have any confirmation that whether market is ready to go higher or not, और ट्रेड्स लेने के लिए काफी दिक्कत होगी, राइट? सो आई बिलीव यस, बुल्स हैव tried their best to outperform, बट मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में इनिशियल 2 to 3 days में हमको पता चल जाएगा दैट दिस मार्केट इज रेडी टू गो हायर और दिस इज जस्ट अ 1 day ब्रेकआउट एंड जस्ट 1 day पुल बैक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2 to 3 days ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से देखिए, मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर इन एन अप ट्रेंड। इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स अगर मैं इस इंडेक्स को देखूं तो आई विल जस्ट लाइक टू यूज वन पर्टिकुलर टूल एंड इफ यू जस्ट कंपेयर इट, then from the start to the bottom, I think it has been able to correct by 6.35% from the top. So after correcting 6.35%, the support which is coming in the weekly time frame chart is 38.20% retracement, and that level is close to 49,900, which is a round number. और एग्जैक्टली सेम लेवल पे अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो डेली चार्ट में हमको रिट्रेसमेंट जो मिलेगा वो है 50% रिट्रेसमेंट। सो जनरली जब भी ऐसा होता है कि डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हमको एक सपोर्ट है, सेम सपोर्ट अगर हमको वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे मिलेगा, देन दैट पर्टिकुलर सपोर्ट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। बिकॉज हमने देखा कि यहाँ पे 38.20% रिट्रेसमेंट है, सेम लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 49,800 से लेके 49,900 के बीच में। सो वी कैन से कि यहाँ पे सपोर्ट है, दैट इज फाइन। इन लास्ट फ्यू डेज बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर दिया है, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट इफ यू वांट सम पॉजिटिविटी तो हमको 2 आवरली टाइम फ्रेम चार्ट्स में हमको ये समझना पड़ेगा, द फर्स्ट इंडिकेशन that the market is ready to go higher, that the bank nifty future is ready to go higher will be that it closes above this gap with a big green candle and you will see some positivity continuing. This is the minimal requirement and it is not going to be easy because देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, you can have your own view, this is my personal view, but मेरे हिसाब से trading in banking stocks will not be that easy for the next at least 1 week, maybe 2 weeks also. I'm not saying there will be a very big correction. I'm not saying that we'll have extreme sort of fall on the downside, but there is a decent chance that we
can remain in a range and we can consolidate, especially by looking at the daily time frame chart, especially at the daily time frame chart. क्यों? Because after such a decent consolidation of few days, there is no resentment, there is no positivity which is visible in the Nifty. एटलीस्ट निफ्टी में हमको एक ग्रीन कैंडल दिखा है. अभी उसके बाद क्या होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में हमको पता चलेगा, बट बैंक निफ्टी में तो हमको वो भी नहीं दिख रहा है. द कैंडल विच इज विजिबल ओवर हियर इज अ हाई वेव कैंडल, not even a high wave, not even a complete high wave candle. It's a half hazard candle. So we need some positivity. Chances हैं कि आने वाले कुछ टाइम में कंसोलिडेशन और कंटिन्यू होगा. If we see a big up move in bank nifty in the next week itself, I'll be really surprised. Okay. Now talking about PSU banks. देखिए PSU banks ने रैली भी बहुत अच्छी दी थी. You can see and continuously in this zone for multiple weeks, you can say, or months, I've been saying that they need some sort of consolidation. They need some rigorous consolidation and we have seen one. Now what has happened over here is in the banking pack, we had a decent correction recently. Now this is the 38.20% retracement in the PSU banking pack in the weekly time frame chart. In the daily time frame chart, you can see that हम लोग 161.80% extension पे खड़े हैं. And along with that, we have a positive divergence. ये देखिए. We have a decent positive divergence in the PSU banks. So does this mean that suddenly we'll hit a bottom and this is a buy signal? The answer is no. हमको देखना पड़ेगा. We'll have to wait and watch. Just because of a positive divergence, we cannot say that things are fine and now we'll see an upside momentum. Why? Because यहाँ पे gap भी है. What if the index gives a decent pullback for 1 or 2 days and then suddenly hits a new low? So that is the reason in a choppy market, because हम सबको पता है कि पूरा जो market फिलहाल है वो काफी choppy है. In a choppy market, your aim should be to trade less, pick high probable trades and see through those choppy days, those choppy periods in the market. ठीक है? So yes, फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं that we are at a good support. We have a positive divergence in the daily time frame chart, but let's wait and watch for next few days what happens. We don't want to jump onto conclusions very soon. And since we avoided PSU banks for a very long time, because जब भी हमको पैसा बनाना है, चाहे ये इंडेक्स हो या स्टॉक हो, we'll need a trend. Without a trend, you cannot make money, even in a 5-minute chart, even on a daily chart. And we have been able to stay away from the banking, PSU banking pack for multiple weeks. And since we are away from this choppiness, we have saved a lot of money for us. Okay? Let's have a look at the private banking. Private banking pack, I should say it looks very, very similar to the bank nifty chart, because again in you can say in the private banking pack we have retraced. There are a couple of hammers over here, but there is no point of this hammer because the trend is flat. But in the daily time frame chart हमको क्या दिख रहा है कि हम लोग 50% retracement पे हैं. There is a decent hammer over here. Now the question is that will we continue going higher or not? That only time will tell. And और एक बार मैं बोलूंगा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, that banking में HDFC Bank is one of the biggest stocks. I do agree that there are a lot of gaps over here, and due to this gap, couple of times there was a 1 or 2 day sell-off which did lead to some sort of short-term weakness in the Nifty and Bank Nifty. But we need to understand currently HDFC Bank is not in a trending phase. It's in a choppy phase. But if it wants to help Bank Nifty, if it wants to help private banking pack, then it will have to do some wonders. There is one more stock which is looking decently attractive right now, but I don't have the complete confirmation. I'll be waiting for that. Whenever I'll have it, I'll share that stock with you. Okay. Energy pack. Energy pack, I should say that in the monthly time frame chart, things are fine. We are in an uptrend, but we are overstretched. In the weekly time frame chart, also we are in an uptrend, but the momentum is not there. See this movement? This was a very, very high momentum market, VM. This is a low momentum market. Why? Because we are not able to see a lot of big green candles. And you see the slant. The slant is not vertical, but I should say this is 90 degrees. This is less than that.
this would be 45 degrees. This is between 45 and 90, but ये बहुत ही कम है. यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है. So you have to be very very careful when you're trading in these stocks. एंड मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्पाइक आपको ऊपर की तरफ दिखेगा. इफ यू रिमेंबर, मैंने 2 स्टॉक्स शेयर किए थे आप सबके साथ. एक था बीपीसीएल. बीपीसीएल मैंने शायद से यहां पे शेयर किया था समवेयर अराउंड ओवर हियर, बिकॉज देयर वाज रेंज ब्रेकआउट. यहां पे शेयर किया था, सॉरी, यहां पे शेयर किया था जब एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया था. आफ्टर दिस ब्रेकआउट 315 316 वाला स्टॉक ऊपर तक गया था. देन इट रिट्रेस. इफ इट ब्रेक्स दिस लो, then yes, then the trend will end. But as far as this low is not broken, there's a possibility that it will continue to move higher. And the second stock which I had shared with all of you few days back was Hindustan Petroleum. Now Hindustan Petroleum में भी एक range breakout आया था. So range breakout, you can see there's a range breakout over here. Okay, so after this breakout we had a decent up move, then there's a retracement, and if this low is broken, you can say 355 closing basis, if it is broken, then I think जो positive view बना है stock में वो टूट जाएगा, negate हो जाएगा. If it is not negated, then it will continue to move on the upside. All right, metal pack अगर मैं monthly time frame chart देखूं तो we are in a decent steady uptrend, not any problem. In last 3 months momentum was lacking. Then in the weekly time frame chart also we can clearly see there is no trend right now, because all the candles which have been made recently are of absolutely no point. This is a hammer, this is an inverted hammer, and again 2 candles which have lower wicks. But the thing is, yes, we are at a decent support. ये एक चीज है, but trend नहीं है. We are in a flat trend. Whatever positivity is visible to me is only and only in the monthly time frame chart, because we are in an uptrend, and the daily time frame chart. Weekly time frame chart is absolutely worthless. We have a decent positive divergence over here. Okay, this is the positive sign, and along with that what we can see is couple of hammers. So now what we need to see is कि इतने पॉजिटिविटी के बाद क्या हम पुल बैक दे सकते हैं मेटल पैक में या नहीं, और ये पुल बैक कितना सस्टेन करेगा, बिकॉज यहाँ पे लगातार 2 गैप्स है, एक ये छोटा गैप और ये बड़ा वाला गैप. सो आई थिंक ये टाइम ही बताएगा दैट आर वी एबल टू सरपास दीज गैप्स एंड मूव हायर, और इट्स जस्ट अ ब्लिप ऑफ कपल ऑफ डेज एंड देन अगेन वी मूव लोअर. ये टाइम के साथ ही पता चले. Auto pack, I think what is happening is we are in an uptrend. It's refusing to come down, I believe. And you can see even over here, the gap is almost filled, not exactly filled, but almost filled, you can say. This is one stock which you can track at your end, because there is some sort of positivity which is visible to me. It's just trying to bounce back from the recent support. I think short-term momentum traders can keep a watch on this particular stock. Finance pack. Now, finance pack, I think you'll have to be very tricky. You'll have to be very careful, because they keep monthly time frame chart में uptrend चल रहा है. Weekly time frame chart में nothing great is visible because we are in an uptrend, but momentum यहाँ पे नहीं है. We have retraced and still there is no momentum. But if you check the daily time frame chart, we are trying to bounce back from a decent support. This previous high, I'll just try to highlight this for you. This previous high was a decent support. हमने इसके नीचे एक या 2 दिन यहाँ पे क्लोज दिया है, but we are not able to sustain below it, which is a positive sign. If it start pulling back on the upside, it will be a positive sign for the finance pack. But the problem is that in today's market, जहाँ पे market बहुत ज़्यादा choppy है, not just finance pack but the entire market is choppy, finding the right stock is very very important. Just because the finance pack moves up and you will try to pick any random stock is certainly not going to help you. You will not make money by picking stocks, because जो IT पैक में हुआ है, I'll be coming to that point also, जो IT पैक में हुआ है वो जरूर नहीं है कि हर एक स्टॉक्स में वो. सो मेरे हिसाब से एक स्टॉक
जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए वो है आदित्य बिरला कैपिटल. Now, if you check this particular stock, then it is trading near a decent support. This is the 61.8% retracement, according to me, of this entire run, and it's trying to bounce back pretty nicely. यहाँ पे मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि यहाँ पे एक लोअर लो बन रहा है, ये ध्यान रखिए. और RSI में अगर आप देखोगे तो इट्स अ हायर लो. ये देखिए RSI में हायर लो है. So we have a positive divergence. So as a trader, you need to keep watch on this stock and kindly analyze at your end. Consumption pack. I think consumption pack, if you can see properly, it's in a positive momentum in all the 3 time frames. And you should be careful about picking your stocks, but overall, there is no negativity visible in this sector. FMCG पैक. FMCG पैक ये मैंने पहले भी कहा है, वापस मैं रिपीट करूंगा. एज अ पोजिशनल ट्रेडर इस लेवल पे नया कुछ ऐड करने का कुछ पॉइंट नहीं है. Only thing which is visible as of now is there is some sort of negativity over here because of this resistance. Also, we are a little bit overstretched in RSI. RSI is also not ready to come below 70, which is a decent sign. It's a sign of strength. But the question is, क्या ये पूरा टाइम एक करेक्शन के बदले सिर्फ कंसोलिडेशन ही होगा and after that there will be an up move or not? I have frankly no idea because nowadays corrections market में उतने deep नहीं दिख रहे हैं. Even over here you can see there is little bit of pullback and suddenly the markets are moving up. So in that case मेरे पास ऐसे दो stocks हैं which are looking slightly better than their peers. First one is Marico. इसमें मोमेंटम फिलहाल नहीं है, बट आने वाले टाइम पे इसमें मोमेंटम आ सकता है. सो ट्रेडर्स शुड कीप वॉच ऑन दिस स्टॉक. एंड द सेकंड स्टॉक which I like is Tata Consumer. If you just have a look at the 2 hourly time frame chart, you will understand. 2 hourly time frame chart में यहाँ पे क्या हुआ है कि this is a downtrending channel. And if you just connect this, I'll just take a real trend line actually. We have a decent trend line breakout. Okay, so we have a decent trend line breakout over here, which is a sign of positive momentum. In fact, if I draw 2 trend lines also, तो शायद काफी points connect हो पाएंगे. ये देखिए यहाँ पे भी हो गया. So this is an early sign that Tata Consumer is trying to go on the upside. So short-term momentum traders, swing traders should keep a watch on this particular stock. Infra pack. देखिए इंफ्रा पैक में मेरे हिसाब से we are in an uptrend but pretty much overstretched in the monthly time frame chart. It needs decent consolidation. In the weekly time frame chart we are in an uptrend but यहाँ पे gap है जो fill होना पड़ेगा. So we have this one day up move on 16th of August which was on Friday. But सिर्फ एक दिन के move से पता नहीं चलेगा. ये gap अगर fill हो सकता है, if it does happen, it will be positive for the overall sector. IT pack outperforms. ये मैंने last week भी बोला था that IT pack is one of the sectors which is looking pretty nice. Only thing is ये जो gap है ये fill हो जाना चाहिए. If this gap is filled, then there's a decent chance of upside momentum. And I guess the momentum has started on the upside. And whoever has taken positions in their respective stocks can book partial profits and then possibly hold with trailing stop losses. फार्मा पैक वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पे मैंने मल्टीपल स्टॉक्स शेयर किए थे, शायद से सिप्ला था वन ऑफ देम. इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन द अपसाइड. यू कैन सी सन फार्मा जो मैंने शेयर किया था वो भी चल रहा है pretty nicely. It's trending right now pretty nicely. And one stock which did not trend and it negated the positive view was about India, but now it seems it has made its move and आने वाले दिनों में if it sustains then it could again test 28,500 or 28,600. And one more stock which I had shared with all of you I think since many weeks वो था Oro Pharma. Oro Pharma I guess I had shared in the video somewhere around here at 1146, 1135. So ये stock almost 1500 पे आ गया. So you can see the outperformance in the
pharma pack. PSE sector, I guess, if you can see, there are a couple of small candles and there is a gap over here. So if you check the 2 hourly time frame chart, yes, we are trying to build a double bottom, but ये जब तक gap fill नहीं होगा, it is going to be difficult for the PSE sector to move up ahead. ये gap fill होना जरूरी है. So ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा that this gap fills or not. If the gap is filled, then the sector will start moving. The stocks will start moving on the upside. Realty pack, I should say that in the monthly time frame chart, it is extremely overstretched according to me. In the weekly time frame chart, it has retraced. If you just have a study, यहाँ पे मैं एक टूल यूज करना चाहूंगा. From the upside to the downside, almost ये जो सेक्टर है इसने 15% करेक्ट किया है. Why this correction is looking very small? The reason for that is ये जो रैली है नीचे से, ये जो रैली है नीचे से काफी बड़ी है. This is almost 300% possibly. So in a rally of 300%, क्या होता है that when we see a 15% correction in a 300% rally, it looks very small on the chart. That is what we need to understand. So it has retraced, and now if you check the daily time frame chart, it has suddenly, without any warning, it has started rallying. It just hit the oversold zone and it has just started moving up. So this is the positive sign, but आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना पड़ेगा. I'm not very sure, but maybe by the end of next week we'll be able to understand that this is going to be just a pullback, and after that we'll move down or we'll continue to move high. Because I have seen in my life many times that if the rally has been very big, the correction will never happen one way down. What happens is it will always happen one leg down, second leg up, then again a leg down, again a leg up, again a leg down. So are we in a complex correction? Corrections are of two types. One is simple correction, which price बहुत जल्दी नीचे आ जाती है in a very fast manner. दूसरा जो टाइप होता है करेक्शन का वो होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसमें जो सेक्टर और स्टॉक होता है ऊपर नीचे होकर नीचे आता है. सो आर वी इन अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन or are we in a complete uptrend and this is just a 15% dip in the realty pack? ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा. So rather than jumping and taking any position in the realty pack, it will be wise enough to wait for at least next week or at least few days in the next week and then jump to any conclusion. All right. Mid cap pack. Mid cap pack, I think it's looking pretty strong. Yes, it continues to remain overstretched because the weekly RSI is close to 82, 83. But the daily chart is looking fine, and I think the upside momentum in the mid cap should continue in the next few days, according to. But overall, I think पूरे वीडियो के बाद जनरली मैं एक समरी देता हूं, एंड मेरा समरी ये कहता है मार्केट के लिए that as of now it is not a time that if you see any sector that okay ये पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर जाने वाला है तो आप किसी भी स्टॉक को आप ले सकते हो. आपको सिर्फ सेक्टर नहीं देखना है, आपको स्टॉक्स भी देखने पड़ेंगे. क्यों, मैं आपको बताता हूं. वो इसके लिए है क्योंकि in case if market does not move on the upside by a very large margin, why? I'll tell you. बिकॉज अभी जो मैंने वीकली सेक्टोरल एनालिसिस पूरा जो वीडियो शेयर किया, आपने देखा होगा बहुत सारे सेक्टर्स ऊपर हैं. जो सेक्टर्स नीचे आए हैं वो कौन से हैं? मेटल, रियलिटी, बैंकिंग, ये सब सेक्टर्स नीचे आए थे. आईटी काफी नीचे आया, आईटी नीचे से ऑलरेडी ऊपर चला गया. सो इट हैज डन इट्स बिट राइट नाउ. यस, इट विल रिमेन इन एन अपट्रेंड, बट फॉर टाइमिंग इट हैज डन. एफएमसीजी इज कंसोलिडेटिंग. रहा कौन? बैंकिंग. बैंकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट sector in this market. I am not saying that ऐसा ही होगा, but there is a decent chance that upside momentum निफ्टी में आ सकता है. but अगर आप ओवरऑल देखें in the next 1 or 2 weeks, अगर बैंकिंग ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया तो आपको स्टॉक्स में और इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी में नहीं, सेक्टोरल इंडाइसेस में आपको ट्रेंडी मूव्स मिलेंगे, बट निफ्टी में शायद ना मिले. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सिर्फ निफ्टी देख के ट्रेड करोगे तो नहीं चलेगा. आपको सेक्टोरल इंडाइसेस भी ढूंढने पड़ेंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन सा स्टॉक खरीदना है
उतना फाइन ट्यूनिंग आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट इजी टू मेक मनी। ऑलराइट, सो आई होप ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट्स विल मूव इन द नेक्स्ट वीक। If you find this video helpful, please let me know with your comments below. They are helpful. Your comments are very, very encouraging. It motivates me to make new videos and help you, and try to share these videos with other traders also who might find it helpful. Trade less, trade wisely. Thank you.